Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we will discuss about the capsules, pharmaceutical capsules from industrial pharmacy. Again, another chapter for your GPAT Niper DI Pharmacist exam. Right? Industrial pharmacy, again another chapter known as the capsules. What are the capsules? Capsule, again a kind of solid dosage form. Capsule is also a type of solid dosage form. Now it is again unit solid dosage form. Capsules are also again unit solid dosage form, but the difference is that capsules are not made by compression or molding. Capsules are nothing but the kind of unit dosage form in which drugs along with excipient or drug without excipient, they are enclosed in the empty gelatin capsule. Empty gelatin capsule made from a gelatin. Empty gelatin capsule, right? So they are just encloses the active pharmaceutical drug, that is API, just enclosing the API in a inert shell, inert empty gelatin capsule shell. I hope I am audible to you clearly, right? So remember, what are the capsules? Capsules are nothing but a kind of dosage form again it is a unit solid dosage form in which a drugs or drug along with the excipient or without the excipient, it is enclosed in the inert shell made from a empty gelatin. Inert shell made from a gelatin. So gelatin is a kind of polymer, it is a protein. So what we are doing here, in a capsule, drug is enclosed in a empty inert gelatin capsule, right? So what are the capsule? Again, unit solid dosage form in which drug
alone or drug with the excipient. Now drug alone can be used or drug with the excipient is enclosed in the empty gelatin shell, which is very much inert in the nature. Inert in the nature, right? Empty gelatin shell or empty shell made from a cellulose. Now अगर कैप्सूल में सेलुलोज से सेल बना है तो उसको बोलेंगे वेज कैप्सूल. वेज. वेज कैप्सूल. So capsule or empty shell made from a cellulose, it is known as a veg capsule, and this gelatin is a normal capsule. Nowadays for the vegan people, most of the pharmaceutical industries, they have introduced this cellulose empty gelatin, cellulose made empty capsule shell. Empty capsule shell from cellulose is a veg capsule. Now traditionally the gelatin was used. Nowadays some companies have introduced a veg capsules. What do you mean by capsule? It is a kind of solid dosage form, again unit solid dosage form, in which drug alone or drug with the excipient, it is enclosed in the very much inert empty gelatin capsule shell, or either empty cellulose capsule shell, right? Now what are the advantages of capsule over tablet and all that? That is not part for GPAT. Advantages क्या है उसके, है ना? It is easy to swallow, then taste masking is easy, है ना? Manufacturing is easy because in a capsule you just enclosing the drug, है ना? Excipient required is very less, and it is a very convenient dosage form for the clinical trials, etc., etc. That are the advantages, disadvantages. So I will not go in that part. What is important? You should know. Here they may ask you question, what is the veg capsules? Veg capsules means capsule made from a, or empty capsule shell made from a cellulose shell. Veg capsule, right? Now composition of capsule. Capsules are made from either methyl cellulose or polyvinyl alcohol or denatured gelatin. Now empty gelatin, okay, empty capsule shells. Empty capsule shell, जो empty capsule shell होता है वो कैसे बनता है? Empty capsule shells, they are made either from methyl cellulose, it is known as a veg capsule, polyvinyl alcohol and denatured gelatin. Whatever capsules you are getting in the market, most of the capsules are a gelatin capsule, empty gelatin capsule, or drug enclosed in the gelatin capsule, right? Now capsules, they are of two types, hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. Along with the drug material, they may have certain amount of additives. The capsules may have small amount of certified dyes, opacifying agent, plasticizer and preservative, जो empty gelatin capsule होता है. So while making a empty gelatin capsule shells, so along with gelatin it has some other added component like certified dyes for color. Dyes for color, आप है ना, आपका रेड कलर का, ब्लैक कलर का कैप्सूल आता है ना, येलो कलर का कैप्सूल आता है, that is because of the added certified dyes. Then opacifying agent, plasticizer, जो है ना plasticity है कैप्सूल की. Capsule is a elastic in nature, so elasticity is imparted by this plasticizer, like polyethylene glycol. Then they also have some amount of preservative. Gelatin is often from, it is often from animal source. So gelatin is a kind of protein. ये क्या है? Gelatin is a protein. It is a protein obtained by irreversible hydrolytic extraction of a plant. It is a protein obtained from irreversible hydrolytic extraction from the animal source. So treated with a treated animal collagen. Common source is the collagen, then animal bones, then hide portion, then frozen pork skin. So gelatin is obtained from animal source. Gelatin जो है empty gelatin से जो empty gelatin capsule बनता है वो कहाँ से मिलता है आपको? It is obtained from the
animal source. So by hydrolyzing it is hydrolyzed and extracted from the animal skin, bones and hide portion or pork skin, है ना, स्किन से या फिर एनिमल के बोन से मिलता है ना. So that's why a lot of people they don't prefer capsule, those who are vegetarian. So that's why companies have introduced veg capsules. That is a capsule made from cellulose cell. Cellulose कहाँ से आता है? Cellulose it is from plant. Cellulose is a plant product. तो cellulose से ही capsule बनता है and उसे बोलते हैं veg caps. Now gelatin क्या है? It is a kind of protein. It is a heterogeneous product. It is a heterogeneous product obtained by irreversible hydrolytic extraction. ना, it is obtained by irreversible hydrolytic extraction. Extraction of treated animal collagen. Animal का जो collagen है, collagen protein, उससे ये gelatin बनता है. It is not occurs naturally. It is not occurring naturally. Gelatin naturally नहीं होता है. It is the irreversible hydrolytic extracted from animal collagen. Common source of gelatin is a bone, hide portion and frozen pork skin. ठीक है, so that is not important for GPAT. GPAT के लिए आपको एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है. Veg capsules they are made from a cellulose, है ना. Now GPAT के लिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है. There are two type of gelatin. There are two type of gelatin, type A and type B. Type A and टाइप बी, दो टाइप का जिलेटिन होता है. टाइप ए जिलेटिन दैट इज ए फॉर एसिड. ए फॉर एसिड मीन्स क्या है? टाइप ए जिलेटिन इज एसिड ट्रीटेड. टाइप ए जिलेटिन क्या होता है? एसिड ट्रीटेड. बी फॉर बेस. बेस मतलब क्या? अल्कली. टाइप बी जिलेटिन इज अल्कली ट्रीटेड, है ना. याद रखना है टाइप ए जिलेटिन इज फ्रॉम, टाइप ए जिलेटिन इज एसिड ट्रीटेड, टाइप बी इज बेस ट्रीटेड मतलब अल्कली ट्रीटेड. Now type A gelatin has a isoelectric pH of 9, 7 to 9. 7 to 9 pH होता है इसका isoelectric pH. So what is isoelectric pH? The pH at which amino acid exists as a zwitter ion. We have already seen in the biochemistry. The pH at which the amino acid exists as a zwitter ion known as the isoelectric pH of amino acid. And what is the protein? Protein is the polymer of amino acid. तो दैट्स वाई यहाँ पे जिलेटिन इज अ प्रोटीन एंड उसका भी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है. तो टाइप ए जिलेटिन इज एसिड ट्रीटेड, आइसोलेट पीएच इज 7 to 9 एंड इट इज मेड फ्रॉम, कहाँ से बनता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बोन्स एंड पॉर्क स्किन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ना. सोर्स ऑफ टाइप ए जिलेटिन, सोर्स ऑफ टाइप बी जिलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है जीपैट नाइपर डीआई फार्मासिस्ट के लिए. तो बोन्स and pork skin, they have high gelling strength. They have high gelling strength. Gel strength ज़्यादा होता है उसका. And it is used for hard gelatin capsule production. HCG. HGC मतलब क्या? Hard gelatin capsule. So type A gelatin is a acid treated, isolated pH 7 to 9, obtained from bones and pork skin, has a high gel strength and used for the hard gelatin capsule manufacturing. Now type B gelatin is a alkali treated and pH क्या है उसका? Isoelectric pH 7 है ना. Isoelectric pH of type B gelatin is a 4.7 and it is obtained from green bones. Fresh green bones are used for the production. तो आपको क्वेश्चन आता है कि following type of gelatin is obtained from green bones. Remember, so pork skin and bones they are the source for type A gelatin and green bones are the source for type B gelatin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Now bloom strength और gel strength, है ना. bloom strength और gel strength, then viscosity, then iron content, these are the some important specifications of gelatin. जब gelatin बनाते हैं तो उनका उसमें ये क्वालिटी चेक करते हैं कि उसका ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है, उसका जेल स्ट्रेंथ क्या है, उसका विस्कोसिटी क्या है, उसका आयरन कंटेंट क्या है. क्यों आयरन कंटेंट? क्योंकि जेलेटिन बनाते समय बोन्स, पॉर्क स्किन या ग्रीन बोन्स उसको डाइजेस्ट करते हैं बड़े बड़े मेटल के, है ना, मेटल के पॉट्स में.
सो वो आयरन से बना होता है. दैट्स व्हाई ए आयरन कंटेंट ऑफ एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, राइट. सो ब्लूम स्ट्रेंथ और जेल स्ट्रेंथ, देन विस्कोसिटी, आयरन कंटेंट, है ना. नॉर्मली आयरन कंटेंट शुड बी नॉट मोर देन 15 ppm, नॉट मोर देन 15 ppm, है ना, नॉट मोर देन 15 ppm, है ना. इसके ऊपर कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. आयरन कंटेंट ऑफ एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, आयरन कंटेंट ऑफ एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल शुड बी नॉट मोर देन 15 ppm, not more than 15 ppm. And what is the source of iron? कहाँ से आता है? Source of iron is a water. Source of iron is a water. We'll see it now. You can see over here the process of manufacturing of gelatin in the capsule. Gelatin पहले बनाओ, उसके बाद में कैप्सूल सेल बनाओ. Gelatin का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो ड्राई बोन्स, है ना, then they are digested with the 5% hydrochloric acid for 10 to 15 days. Then dibasic calcium phosphate is added, is removed, and lime is added. Lime is added for 4 to 8 weeks. Then there is removal of lime or alkali. Then adjustment of pH. Then adjustment of pH. You get a gelatin. Now again calf skin, मतलब जो बछड़े होते हैं, बछड़े गाय के भैंस के. So wash, add a 10% lime, 6 to 12 weeks, water wash 10 to 30 hours. Then, you know, for skin also same, add acid, you know, 1 to 5% HCl, then remove the acid. Now after that, hot water extraction, then filtration, vacuum concentration, cooling to solidify, air dry, and then mill to size. और उसके बाद में एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल बनता है. This is the overall process. So capsules are nothing but made from gelatin. Gelatin is a kind of protein which is obtained from dry bones, green bones, or pork skin, calf skin by this digestion process, right? After that, very important, from this slide at least 6 times question has been asked. एक ही स्लाइड है आपको, यहाँ पे ये स्लाइड में से क्वेश्चन आया है 6 बार, 6 टाइम्स. कैसे देखो? और पैरामीटर टाइप ए जेलेटिन, टाइप बी जेलेटिन, पैरामीटर ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी जेलेटिन. ए फॉर एसिड ट्रीटेड, ई फॉर अल्कली ट्रीटेड, राइट. नाउ ब्लूम स्ट्रेंथ, पहला है आपका ब्लूम स्ट्रेंथ. ब्लूम स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज अ जेल स्ट्रेंथ, है ना. इसके ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है. Bloom strength or gel strength. What is the normal value of type A gelatin? What is the bloom strength of type A gelatin? A type A gelatin should have bloom strength in a range of 240 to 300 bloom. Type B gelatin will have 200 to 250 bloom. इसके ऊपर भी दो बार क्वेश्चन आ चुका है. What is the bloom strength of type A gelatin and type B gelatin, right? Bloom strength of type A, type B, very important. Then now what is meant by bloom strength? Also known as gel strength. The strength, gel strength means the capacity to form a gel. Capacity to form a gel. Now bloom strength is measured by bloom gelometer. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है नाइपर में. Bloom strength is measured by bloom gelometer. Now what is the bloom strength? It is an indicator of extent of cross-linking in the gelatin, and extent of cross-linking of gelatin polymer in the gelatin molecule. So what it indicate? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. तो bloom strength indicate the strength of cross-linking of gelatin molecule and molecular weight of gelatin. लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है. Bloom strength is directly proportional to the molecular weight of gelatin. So bloom strength is directly proportional to the molecular weight of gelatin. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर में. हाउ टू डिटरमाइन द ब्लूम स्ट्रेंथ, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. तो ब्लूम स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड और परफॉर्म्ड ऑन अ 6.66% सॉल्यूशन ऑफ योर जेलेटिन. जेलेटिन का 6.66% सॉल्यूशन बनाना है एट 10 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू कीप फॉर 17 आवर्स. So okay, so remember
6.67% solution of gelatin at a 10 degree Celsius hold for 17 hours and then determine the bloom strength. Now it is determined by measuring the point and pressure required to remove a plastic plunger from the solution. Now ideal range for gelatin is nothing but 150 to 200 grams. Bloom strength is expressed in the case of grams. So ideal range for gelatin is 150 to 250. Again remember, the cost of gelatin is directly proportional to the bloom strength. जितना ज़्यादा bloom रहेगा उसका उतना ज़्यादा cost रहेगा. ठीक है. Remember, type A gelatin has a bloom strength of 240 to 300. Type B gelatin has a 200 to 250. Right? इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. तो indicate the strength of cross-linking in a cross-linking of gelatin polymer in a molecule. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है 2 बार. GPAT 2024 में क्वेश्चन आया कि bloom strength indicate the molecular weight of gelatin directly proportional to the molecular weight of gelatin performed on a 6.66% solution of gelatin at a 10 degree Celsius held for 17 hours. Now the pressure required to, or the force required to remove a plastic plunger from the solution, that is a taken as a bloom. Force or pressure required to remove the plastic plunger from the solution, that is taken as a bloom, right? So remember. Now next is a source and isolated pH. वैसे अपने already last slide में देखा है, but again you see the source and isolated pH of gelatin. So what is the source of type A gelatin? There is obtained from pork skin, that is a acid treated. याद रखना है, acid treated. That's why type A for acid. And isolated pH of type A gelatin कम से कम 4 बार पूछे. What is isolated pH of type A gelatin? कम से कम 4 बार. It is a 7 to 9. कम से कम 4 बार, मतलब एक ही क्वेश्चन 4 बार. और इसके ऊपर तो कम से कम 6 बार क्वेश्चन आ चुका है. Right? Type A gelatin is from pork skin, acid treated, and isolated pH होता है 7 to 9. टाइप बी जेलेटिन का सोर्स क्या है? ग्रीन बोन्स. टाइप बी जेलेटिन अपने फॉर्म ग्रीन बोन्स, दैट इज अ अल्कली ट्रीटेड एंड देन आइसोलेटेड पीएच क्या है? 4.7 to 5. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है. राइट. नाउ विस्कोसिटी क्या है? अगेन विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन इंडिकेट द मॉलिक्यूलर चेन लेंथ इन द जेलेटिन मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूलर चेन लेंथ इन द जेलेटिन मॉलिक्यूल. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है नाइपर में, एंड इट शुड बी अराउंड 25 to 45 millipoise. व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन? आइडियल 25 to 45 millipoise. देन आयरन कंटेंट, आयरन कहाँ से आता है? वाटर इज द सोर्स ऑफ आयरन, है ना. तो आयरन कंटेंट ऑफ योर एम्प्टी जेलेटिन तो शुड बी नॉट मोर देन 15 ppm. इसके ऊपर भी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. आयरन कंटेंट ऑफ जेलेटिन शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm. 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. मतलब एक ही स्लाइड एक कम से कम 15 बार क्वेश्चन आ चुका है. जस्ट वन स्लाइड 15 क्वेश्चंस कवर्ड. वन स्लाइड 15 क्वेश्चंस कवर्ड. दैट्स व्हाई द कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कंटेंट. क्यों? क्योंकि एक ही स्लाइड के ऊपर अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो मतलब क्या, अभी तक इफ यू सी द प्रीवियस ईयर्स पेपर, एक ही स्लाइड में आपके 15 क्वेश्चन स्कोर हो जाए. इतना इंपॉर्टेंट. ठीक है. रिमेंबर ब्लूम स्ट्रेंथ आल्सो नोन एज जेल स्ट्रेंथ. टाइप ए जेलेटिन विल हैव 240 to 300. टाइप बी विल हैव 200 to 250. measured by Bloom gelometer, and it is the indicator of strength of cross-linking of gelatin polymer in the gelatin. Then also it is directly proportional to the molecular weight of gelatin. Now how to perform Bloom strength?
So it is performed on a 6.66 and a 6.67 बोल सकते हो आप, 6.66% solution of gelatin and at a 10 degree Celsius held for 17 hours and determine the force required or the pressure required to remove the plastic plunger from the solution. Ideal range क्या है? Ideal range of gelatin, bloom strength of gelatin 150 to 200 grams, and cost of gelatin also directly proportional to the bloom strength. Cost of gelatin is directly proportional to the bloom strength. ठीक है, right? Very important. Higher content not more than 15 ppm. Viscosity indicate the molecular chain length in the gelatin 25 to 45 millipoints. Important है. Isolated pH पूछा है बहुत बार. Next, higher will be the bloom strength, higher will be the physical stability of gelatin, and that's why a higher bloom strength gelatin is in a demand always. Gelatin कौन सा demand में रहता है? Higher bloom gelatin, because higher the bloom strength that ensure the physical stability of gelatin. It is a measure of cohesive strength. ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन है. It is a measure of cohesive strength. The cross-linking that occurs between the gelatin molecule, and it is a proportional to the molecular weight of gelatin. ये दो बार बोला है, ठीक है ना. Calculated है ना. Bloom strength is calculated by measuring the weight in grams. Weight in grams required to move plastic plunger. But 4.5 inches of a diameter 4 mm dipped into 6 into 2/3% gelatin solution. 6 into 2/3 मतलब कोई 6.66 at 10 degree Celsius for 17 hours. ये पूरा यहाँ पे इसका प्रोसेस भी दिया है कैसे करना है gelatin का bloom strength. The cost of gelatin is directly proportional to the bloom strength. Viscosity of gelatin is measured by using a 6% solution of gelatin at a 60 degrees Celsius. That is the indicator of molecular chain length in the gelatin. Indicator of molecular chain length in the gelatin. Viscosity range of 25 to 45 millipoints. Depending on the source of gelatin. Depending on the source of gelatin. लो विस्कोसिटी जेलेटिन, अगर विस्कोसिटी कम है उसका तो उसको बोलते हैं लो विस्कोसिटी जेलेटिन, having 25 to 32 centipoise and with the high bloom strength. Low viscosity gelatin with the high bloom strength, it's 180 to 250, is used for the capsulation of hygroscopic vehicle or solid. क्वेश्चन आता है आपको कि what type of gelatin is used, what type of gelatin should be used for a hygroscopic compounds. So for a hygroscopic compound, so what you have to use? Low viscosity gelatin with the high bloom strength. Low viscosity with the high bloom strength gelatin used for hygroscopic solid, hygroscopic vehicle for solid. ठीक है. Now iron content, iron is always present as an impurity in the iron. Iron is always present as the impurity in a gelatin, है ना. And source क्या है? Water. What is the source of iron? That is a water. Water में से आता है. It should be not more than 15 ppm. Not more than 15 ppm. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Solubility limit for empty capsule. Solubility limit for empty capsule. Water resistance, है ना. Water resistance मतलब क्या? Should not dissolve in a water. Empty gelatin should not dissolve in a water at a 20 to 30 degree Celsius in a 15 minute. 15 मिनट के अंदर डिजोल्व नहीं होना चाहिए. Should not dissolve in a water within a 15 minute. It is a water resistance. Acid solubility, है ना. Acid solubility, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. Should not get dissolved in a 5 minute, less than 5 minutes in a 0.5% HCl solution at a
37 डिग्री। तो वाटर रेजिस्टेंस, एसिड सोलिबिलिटी, ये भी दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। steps in the steps of hard gelatin capsule manufacturing. Centrifugal, it is made by centrifugal casting method, then deep pin method, है ना, दो मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड, दूसरा होता है डीप पिन मेथड टू मेक अ हार्ड एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल। तो स्टेप्स इन द डीप पिन मेथड, डीप पिन मेथड में क्या है, मोस्टली यूज्ड on a commercial scale. Deep pin method is used on a commercial scale and steps इसमें क्या है ना, प्रिपरेशन ऑफ एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल क्या है, डिपिंग होता है पहले, स्पिनिंग, ड्राइंग, ट्रिमिंग, जॉइनिंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। जस्ट आपको मालूम होना चाहिए डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग। इफ यू वांट टू रीड द डिटेल यू कैन रीड फ्रॉम द लिवन लेकमन, ओके, नॉट रिक्वायर्ड। तो मोल्ड पिन डिपिंग, जैसे मोल्ड होते हैं उसके जेलेटिन सॉल्यूशन में, ये डीप करने के बाद में विड्रॉ करके बाद में सॉलिडिफाई होते हैं, बाद में उसका स्पिनिंग, ड्राइंग, ट्रिमिंग होता है। ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ कैप्सूल इज नथिंग बट टू मास्क द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रग विद द एलिगेंस यूज एंड ईज ऑफ यूज एंड पैलेटेबिलिटी। मेन एडवांटेज ये होता है ओवर द टैबलेट, है ना, टू मास्क द टेस्ट। मेन एडवांटेज क्या है, टू मास्क द टेस्ट, ओके, ऑर्डर अलॉन्ग विद द एलिगेंस, ना दिखने भी अच्छा लगता है कैप्सूल, अलॉन्ग विद द एलिगेंस, ease of use and palatability, that is the main advantage of capsule. Capsules important point थे वो, they are not used for highly soluble material, है ना, जैसे highly soluble material कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, so these are known as highly soluble material. Capsules are not used for this highly soluble material because they can cause irritation to the capsule shell. ना इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। They are not used for highly efflorescent material. Capsules are not suitable for highly efflorescent material. क्या होता है efflorescent material, है ना, some material, है ना, when exposed to humid condition they will absorb the moisture and there is an increase in the weight of that compound known as a hygroscopic. Hygroscopic मतलब क्या है, कुछ compound क्या है, they will absorb the moisture from environment and there is an increase in the weight of that compound, known as hygroscopic. Some compounds they will absorb a sufficient moisture from the environment and they will become a liquid known as a deliquescent. But some compound when exposed to humid conditions they will release the water of crystallization known as efflorescent. Known as a efflorescent compound, efflorescent material. So they are not suitable for efflorescent material because they will soften the cell. वो जो कैप्सूल एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल चाहिए वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि efflorescent मतलब क्या, they will release the water of crystallization. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज करेंगे तो वाटर में तो जेलेटिन सोल्यूबल होता है ना. इट इज नॉट यूज्ड फॉर हाईली डेलिक्वेसेंट मटेरियल व्हिच कॉजेज द ब्रिटलनेस. तो आपको क्वेश्चन आता है कि इफ डेलिक्वेसेंट मटेरियल is to be encapsulated in the hard gelatin capsule, so what will be the problem? So there is a brittleness of that capsule chain. Capsules are of mainly two type. कितने टाइप के होते हैं कैप्सूल? दो टाइप. एक होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ना. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल. तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज यूज्ड टू एनक्लोज द पाउडर्स, pellets, granules, powders, powders, pellets, granules. They are enclosed in the hard gelatin capsule. Hard gelatin capsule, they are used to enclose the powders, pellets and granules. ठीक है. Then formation of capsule, hard gelatin capsule. Formation of hard gelatin capsule. Then filling
and sealing in the machines. They are the separate process. मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या है कि कैप्सूल फॉर्मेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस. बाद में फिलिंग ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल में पाउडर फिल करना है, पैलेट फिल करना है या ग्रैनुल्स फिल करना है, तो फिलिंग ऑफ कैप्सूल इन द कैप्सूल, दैट इज पाउडर फिलिंग or that pellets or granules, that is a separate process. And after that, sealing of body and cap is also another process. But nowadays filling of liquid and semi solid also also can be done by certain modification of hard gelatin capsule. तो पहले जमाने में क्या था कि सिर्फ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर, ग्रैनुल्स या फिर पेलेट्स फिल कर सकते थे. नाउअडेज क्या है, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड आल्सो कैन बी फिल्ड इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस. दूसरा होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. एक्चुअली दिस इज मोर फ्लेक्सिबल देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या है, ज़्यादा प्लास्टिसाइजर होता है. So there is a more plasticizer added in the soft gelatin capsule, and that's why soft gelatin capsule is a flexible in nature. You might have seen जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ई कैप्सूल आता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आता है ना. या फिर आपने ये भी देखा होगा है ना, एप्लीकैप, क्लोरम्फेनिकोल एप्लीकैप वगैरह, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. लिक्विड्स आर टू बी एनक्लोज्ड है ना. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या है, लिक्विड एनक्लोज होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई है ना, ये लिक्विड जो है ना वो आता है इसमें, जैसे कोलिक एसिफेरॉल है ना. तो लिक्विड आर टू बी एनक्लोज्ड, दैट लिक्विड शुड नॉट सोल्यूबलाइज द सेल, दैट इज वन क्राइटेरिया. लिक्विड शुड नॉट सोल्यूबलाइज द सेल, एंड दे आर मेड बाय a rotary dye process. They are made by rotary dye process. Now formation, filling and sealing, this is all in one process. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल इज डिफरेंट, फिलिंग सीलिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस. तो यहाँ पे सॉफ्ट जिलेटिन में फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, फिलिंग एंड सीलिंग, दैट इज ऑल इन वन प्रोसेस, ऑल इन वन प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन आता है प्लास्टिसाइजर्स एडेड इन द जिलेटिन कैप्सूल. प्लास्टिसाइजर्स, so they are used for soft gelatin capsule, and the ratio weight by weight, that is of ratio weight by weight of dry plasticizer to the dry gelatin will determine the hardness of gelatin cell. Common plasticizer in a soft gelatin capsule is gelatin. Sorry, common plasticizer in a soft gelatin capsule is glycerin. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. ग्लिसरीन, देन सॉर्बिटॉल, याद रखना है, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, दे आर द यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर इन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. एक पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, तो याद रखना है प्लास्टिसाइजर्स यूज्ड इन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. और नेक्स्ट विल सी additional components for generating the capsule mass. So while making the empty capsule or empty gelatin and empty gelatin capsule, so certain additives are added ना. कैप्सूल क्या है, कैप्सूल कैसे बनता है, जेलेटिन से बनता है, एंड दैट जेलेटिन इज अ प्रोटीन. तो वहाँ पे डिटोरेट भी हो सकता है, वो वहाँ पे है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकता है उसके ऊपर, वो है ना. फॉर दैट पर्पज some additional components are used. So here is a given category 1 के additives है ना, तो उसमें मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, they are used as a preservative in 0.2%, 0.2%. ठीक है. Then food, drug and cosmetic, and drug and cosmetic.
FDC and FDC and DNC. Food, drug, cosmetic and drug and cosmetic. Water soluble dyes, certified lakes, pigments, vegetable colors, they are added either single or in combination as a coloring agent. टाइटेनियम डाइऑक्साइड का रोल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज द रोल ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन द कैप्सूल. इट इज यूज्ड एज ओपेसिफाइंग एजेंट. इसका रोल पूछा है, इंपॉर्टेंट है. देन इथाइल वेनिलीन इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट and essential oils are also used as a flavoring agent and for taste बढ़ाने के लिए इथाइल वेनिलीन essential oil. कैटेगरी 2 में आता है सुक्रोज up to 5% used for chewable shell and chewable capsule shell में आता है ये सुक्रोज. turmeric acid to increase the solubility to reduce the aldehyde tanning in the gelatin. मतलब अगर अल्डिहाइड है तो जेलेटिन के साथ में रिएक्ट होके ब्लैक कलर बनाता है, इसलिए अल्डिहाइड टैनिंग. ठीक है, तो ये कुछ एडिटिव्स है एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. PAST स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है. मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव. देन food, drug and cosmetic and drug and cosmetic dyes are used as a coloring agent. टाइटेनियम डाइऑक्साइड का रोल क्या है, ओपेसिफाइंग एजेंट. यहाँ पे देखो और एक बार बोलता हूँ मैं, तो मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन दे आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. FDC and DNC dyes, lakes, pigments, certified lakes and pigments single or in a combination used as a coloring agent. टाइटेनियम डाइऑक्साइड is used as a opeifying agent. And ये जो essential oils and ethyl vanillin both are used as a flavoring agent to improve the taste. ठीक है. कैटेगरी 2 में सुक्रोज is used in the chewable capsule shell to enhance the taste and fumaric acid और यहाँ पे formic acid बोल सकते हैं. fumaric acid, formic acid increases the solubility of capsule gelatin, है ना, and to prevent the aldehyde tanning. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज अ 12 to 15%. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शुड बी 12 to 15%. अगर इससे नीचे रहेगा तो क्या हो सकता है, और इसके ऊपर आ गया तो क्या हो सकता है. तो मॉइस्चर कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल. तो अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है, बिलो द 10% मॉइस्चर कंटेंट, कैप्सूल विल बिकम ब्रिटल एंड डायमेंशनल चेंजेस विल ऑकर. अगर है ना, तो अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा तो कैप्सूल ब्रिटल बनता है या फिर उसमें डायमेंशनल चेंजेस आते हैं, मतलब उसका शेप चेंज होगा. अबव 16%, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, इफ देयर इज मॉइस्चर मोर देन 16%, दैट लीड्स टू लॉस इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. It causes the problems in the filling of capsule. Handling range for empty gelatin capsule, that is a 30 to 45% relative humidity. Now, for measurement of water content of capsule, toluene distillation method is used. Toluene distillation method is used for the water content measurement. And in the final blend, glidant are added to improve the flow of powder like glycerol, ester, silicon dioxide, metallic stearate, stearic acid and talc. Now, ये जो है चार्ट इंपॉर्टेंट है IMP. Why IMP? So they used to ask you question on this: what is the GG ratio of hard gelatin capsule? What is the GG ratio of soft gelatin capsule? So for that, what is GG ratio? To change the properties of gelatin, so plasticizer is added. Like glycerin is a commonly used plasticizer. Glycerin sorbitol क्या है,
कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर इन द जिलेटिन, ठीक है। तो इन केस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो द रेशियो ऑफ जीजी मतलब परसेंटेज रेशियो ऑफ ग्लिसरीन टू द ड्राई जिलेटिन इज अ 0.4 to 1, मतलब 0.4% ग्लिसरीन रहेगा, 1% जिलेटिन रहेगा। नाउ दैट विल गिव यू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ओके, that is used for oral oil based shell softening material humid areas, है ना। तो एम्प्टी कैप्सूल जेल, एम्प्टी कैप्सूल जेलेटिन कैसे बनाएंगे आप, ये रेशो ऐड करने के बाद में हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनता है, एंड दैट इज यूज्ड टू फॉर ओरल ऑयल बेस्ड, है ना, ड्रग्स शेल सॉफ्टनिंग मटेरियल ह्यूमिड फॉर द ह्यूमिड एरियाज, ये ह्यूमिड एरियाज के लिए रहेंगे। नाउ मीडियम कैप्सूल, मीडियम जेलेटिन, so in that you have GG ratio 0.6 to 1, so used for oral, you know, then vaginal oil based drug delivery, water miscible based और shell hardening material for a temperate area, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सॉफ्ट जिलेटिन में क्या रहेगा, द GG रेशियो इज हाई, तो 0.8 to 1, मतलब हार्ड जिलेटिन में 0.4, मीडियम में 0.6 और लास्ट में 0.8, याद रखना है। सॉफ्ट जिलेटिन इज यूज फॉर ओरल, है ना, वजनल ऑयल बेस्ड डिलीवरी, वाटर मिसिबल बेस्ड शेल हार्डनिंग मटेरियल प्राइमरी फॉर कोल्ड एंड ड्राई एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि which capsule is suitable for cold and dry areas, so soft gelatin that should have 0.8 to 1 GG ratio। क्वेश्चन आता है which capsule is suitable for humid areas, so that is a hard gelatin capsule, GG ratio is a 0.4 to 0.4 by 1। वेज कैप्सूल्स बोला है मैंने, वेज कैप्सूल्स में कैप्सूल विच आर मेड फ्रॉम, है ना, सेलुलोज लाइक HPMC, hydroxy propyl methyl cellulose, there are 2 to 5% moisture contained in wedge capsule, no? Starch is also there, some wedge capsules are made from starch, so here there you will have 12 to 14% moisture contained, also made from cross-linked dextran। wedge capsule सेलुलोज, स्टार्च एंड डेक्सट्रान से बनते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ कैप्सूल, है ना, कैप्सूल फॉर फिलिंग you have machines, capsule filling machines, so in that what are the steps, capsule filling steps। पहला है रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब हॉपर होता है उसमें एम्प्टी कैप्सूल डालते हैं, है ना, तो कैप्सूल में क्या है कि देयर इज वन बॉडी एंड देयर इज वन कैप। कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा, सपोज दिस वन इज अ बॉडी, दिस वन इज अ कैप, ऊपर वाला कैप है, नीचे वाला बॉडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, वो रैंडम होते हैं हॉपर में, एंड मशीन्स में जाने के बाद वो क्या करें, ओरिएंटेशन इन द सेम डायरेक्शन, ओरिएंटेशन इन द सेम डायरेक्शन, नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो व्हाइल, है ना, फर्स्ट स्टेप इज रेक्टिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप। सेकंड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप, ये सेपरेट हो जाएगा बाय यूजिंग अ वैक्यूम, वैक्यूम इज यूज्ड टू सेपरेट। देन डोसिंग एंड फिलिंग, machine will measure appropriate dose of powder or granules and they will fill in this body, and after that there is a joining and collection, joining of body with the cap and then collection। now fill capacity of hard gelatin capsule, देखो fill capacity है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिल कैपेसिटी ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो कैप्सूल के साइज होते हैं जैसे, है ना, कि 0, 00, 000, 000, 1 2 3 4 5, नॉर्मली 000, 0 1 2 3 4 5 ये कैप्सूल के साइज होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे कम दिया है,
0 1 2 3 4 5, बट एक्चुअली देर आर 0 0 0 0 है ना, 0 1 2 3 4 5 11 10 11 12। तो आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कैप्सूल एंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट मिलीग्राम ऑफ, है ना। कैप्सूल में क्या है, कैप्सूल में यू कैन फिल द पाउडर आल्सो, यू कैन फिल द ग्रेनुल्स आल्सो, यू कैन फिल द है ना पेलेट्स आल्सो, यू कैन फिल द लिक्विड आल्सो। तो कैप्सूल्स एंड देयर कैपेसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो जस्ट वन स्लाइड एटलीस्ट, यहाँ पे कम से कम 6 to 7 टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर। जैसे देखो, है ना, फॉर ह्यूमन यूज देखेंगे अपने पहले। फॉर ह्यूमन यूज व्हाट आर द कैप्सूल, एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल्स। फॉर ह्यूमन यूज देर आर 000 000 0, ये कैप्सूल की साइज इंडिकेट करता है। देन आफ्टर दैट 1 2 3 4 and 5 and 5. Remember, for human use 000 000 1 2 3 4 5, these are the capsule cells, है ना। अब 000 कैप्सूल में कितना ml लिक्विड बैठेगा, तो 000 कैप्सूल हैज अ कैपेसिटी टू फिल द 1.37 ml, 1.37 ml, right? 00 has a capacity to fill the 0.9 ml. 0 is having capacity to fill the 0.75 ml. Then capsule number 1 has a 0.55 ml, capsule number 2 0.4 ml, capsule number 3 0.3 ml, capsule number 4 0.2 ml, and capsule number 5 0.15 ml। मतलब लिक्विड फिलिंग कैपेसिटी है ना। तो लिक्विड फिलिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा टाइम नहीं पूछते, बट सॉलिड के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। बट यू शुड नो 000 अराउंड 1.37 ml, 00 0.9 ml, सिंगल 0 और 0.7 ml, 0.75 ml, 1 कैप्सूल नंबर 1 0.55 ml, कैप्सूल नंबर 2 0.4 ml, कैप्सूल नंबर 3 0.3 ml, नंबर 2 0.25 ml, कैप्सूल नंबर 5 0.15 ml। ठीक है। नाउ सॉलिड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, 1 ग्राम है 950 mg to 1 gram of drug, 950 milligram to 1 gram of drug that can be filled into the capsule number 000। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज इज 000 000 1 2 3, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो 000 is the largest size capsule for human use, for human use, so it will accommodate around 950 to 1 gram। इसमें 950 ग्राम 950 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम तक, मतलब 1 ग्राम तक यहाँ पे आ जाता है 000 में पाउडर। ठीक है। नाउ 00 650 मिलीग्राम टू 760 मिलीग्राम फ्रॉम 00 कैप्सूल। तो 00 कैप्सूल can, so 650 milligram to 760 milligram drug can be filled into 00 capsule। now 000 में 450 to 550 आप बोल सकते ना, 450 to 550। so this is a 0 capsule, 0 number capsule is the most commonly used। क्यों? because most of the drugs का डोज कितना होता है 500 milligram, most commonly used। लार्जेस्ट वाला कौन है 000। नाउ कैप्सूल नंबर 1 हैज अ कैपेसिटी टू फिल द 300 मिलीग्राम ऑफ ड्रग, कैप्सूल नंबर 2 250 मिलीग्राम ऑफ ड्रग, कैप्सूल नंबर 3 200 मिलीग्राम ऑफ ड्रग, है ना। कैप्सूल नंबर 1, कैप्सूल नंबर 4 150, कैप्सूल नंबर 5 100। मतलब यहाँ से देखो, सबसे पहले याद कैसे रखना है, 000 1 ग्राम लिखो, 950 टू 1 ग्राम। उसके बाद में क्या है कि 650 टू 750 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 0 क्या है 450 टू, है ना 500। मतलब आप इससे याद रखो कि 500 के अराउंड जो है ना वो 500 के अराउंड वो 0 कैप्सूल जो है
उसमें 500 mg के अराउंड ड्रग बैठता है। 500 mg ड्रग दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल नंबर 0। उससे ज़्यादा किस में रहेगा? 00 में, मतलब 650। उससे ज़्यादा किसमें रहेगा? 000 में, 950। ऐसा देखो, याद रखो 500, 650, 950। ये एक बार याद होगा। नीचे वाली इजी है। तो वन कैप्सूल नंबर 1 में क्या है? 300 mg, उससे 50 mg कम करो। कैप्सूल नंबर 2 में क्या है? 250, उससे 50 mg कम करो। कैप्सूल नंबर 3 में क्या है? 200, उससे 50 mg कम करो। कैप्सूल नंबर 4 में क्या है? 150। कैप्सूल नंबर 5 में क्या है? 100। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स। और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, मैंने जैसे बोला है 6 to 7 टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी इन एग्जाम। लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन आया है GPAT 24 में। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल नंबर 00, द फिल कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल नंबर 00 इज, है ना, तो एक ऑप्शन में था 650 मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। देन अगेन रिमेंबर, दीज आर द फॉर ह्यूमन यूज। ये सब क्या है? कैप्सूल नंबर 00000 0 1 2 3 4 5, दे आर फॉर ह्यूमन यूज। फॉर वेटरनरी यूज, वेटरनरी मतलब क्या? जानवरों के लिए, है ना, जैसे गाय, भैंस, बैल, है ना, गेंडा, है ना, इसके लिए क्या है? तो फॉर वेटरनरी यूज देर आर कैप्सूल नंबर 10, कैप्सूल नंबर 10, कैप्सूल नंबर 11, कैप्सूल नंबर 12, which can fill the expected liquid। कैप्सूल नंबर 10 में 30 ml, कैप्सूल नंबर 11 में 15 ml, कैप्सूल नंबर 12 में 7.5 ml, that can be filled। इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंट कैप्सूल मेकिंग मशीन एंड देयर रोल, है ना, कैप्सूल मेकिंग मशीन एंड देयर रोल। तो एक है रोटोवे, रोटोवे, ये क्या है? रोटोवे, इसके नाम में लिखा है इट इज अ कैप्सूल वेइंग मशीन। रोटोवे इज अ कैप्सूल वेइंग मशीन फॉर द, फॉर द वेट वेरिएशन, कैप्सूल वेइंग मशीन। तो कैप्सूल, है ना, कैप्सूल वेइंग मशीन measures the reflected energy, that is a backscatter, low powder x-ray beam। यहाँ पे देखो रोटोवे में मैकेनिज्म क्या है? कैप्सूल वेइंग मशीन मेजर द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन GPAT 24 में आया है, GPAT 24 में आ चुका है, ये पहले भी आ चुका है। रोटोवे विल मेजर द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, that is known as a backscatter, low powder x-ray beam is used in this machine। then VariCap 1200, VariCap 1200 क्या है आगे? कैप्सूल वेइंग मशीन and it will measure the changes in the dielectric constant और कैपेसिटेंस वेरिएशन। तो आपको नेक्स्ट ईयर ये पूछ सकते हैं VariCap 1200। नेक्स्ट था यूरेका किया। यूरेका किया इज अ कैप्सूल पॉलिशिंग डी-डस्टिंग मशीन। रोटोफिल क्या है? रोटोफिल, इट इज अ मशीन फ्रॉम इली लिली एंड कंपनी। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस मशीन रोटोफिल फॉर फिलिंग ऑफ pellets in the capsule, filling of pellets and granules in the capsule। pellets, granules and powder, यहाँ पे granules भी खींच सकते हो, pellets भी खींच सकते हो, या फिर पाउडर भी। pellets and granules, ठीक है। सेकंड आता है एक्कोफिल, क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार इसके ऊपर। एक्कोफिल, तो it is a machine, actually it is a model from paper industry and it is used to fill the powder into empty capsule, fill the powder into empty capsule। then shade under machine, shade under machine, shade, है ना, shade in under machine, it is a capsule polishing machine। तो देखो रोटोवे, रोटोवे, वेरिकैप, है ना, यूरेका किया, रोटोफिल, एक्कोफिल, एक्को जेल भी एक आता है टू फिल द लिक्विड इन द एक्को जेल आता है, एक्को जेल, है ना, एक्को जेल।
to fill the liquid in the capsule, soft gelatin capsule. तो important है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसमें. You can see over here different manufacturing units, मतलब machines, their model, output, capsule size and to fill what. यहाँ पे देखो पहला है इली लिली एंड कंपनी. इससे कौन सा मशीन आया? इली लिली कंपनी से रोटोफिल कैप्सूल फिलिंग मशीन. तो इट विल फिल ए 96,000 कैप्सूल पर मिनट पर आवर. 96,000 कैप्सूल पर आवर. कैपेसिटी कितना है? नाउ इट इज यूज्ड टू फिल द पैलेट्स इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. रोटोफिल ना, ये जो फार्मेटिक बोलोगे ना इटली, ये जो है इट विल फिल अ पाउडर कैप्सूल. बाकी के एमटी वगैरह ये बाकी मत करो, बस इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपको. एक्ोफिल. तो एक्ोफिल मशीन, कैप्सूल मेकिंग मशीन can fill 60,000 capsules per hour and used to fill the powder. Used to fill the powder in the liquid. Used to fill the powder in the empty gelatin capsule. ठीक है, ये हमें याद रखो. एक्ोफिल है ना. देन mg2 इसका भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि mg2 used to fill the pellets capsule and powder in the हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. ठीक है, ये 2-3 चीज याद रखो बस, बाकी ज़्यादा बाकी नहीं किया तो भी चलेगा. मैकोफर. नाउ सॉफ्ट कैप्सूल मेकिंग मशीन. तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं? तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटरी डाई प्रोसेस. सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल दे आर मेड बाय रोटरी डाई प्रोसेस. और इसी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन है. सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर मेड बाय रोटरी डाई प्रोसेस. ठीक है, इसको कैसे बनता है आपको एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ मैं. तो हियर इज अ जेलेटिन टैंक. यहाँ पे जेलेटिन का सॉल्यूशन होता है दैट विल पास थ्रू दिस थिंग एंड ऑन अ देयर इज अ वन रिबन ओवर हियर. There is a one belt over here, and अंदर से कूल होता है वो बेल्ट. So this empty solution is spread on the belt, and there is a formation of ribbon. There is a formation of gelatin ribbon. Gelatin का ribbon बनता है. Right? जैसे ये एक साइड पे है, वैसे ही दूसरे साइड पे भी होता है. तो यहाँ से एक जेलेटिन का रिबन आएगा, यहाँ से एक जेलेटिन का रिबन आएगा. हियर इज अ लिक्विड टू बी फिल्ड, मतलब प्रोडक्ट टू बी फिल्ड है ना. यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये कैप्सूल का साइज होता है इसके ऊपर. एंड एक ही इसमें बहुत सारे कैप्सूल आपको मिल जाएंगे. लाइक दिस नोन एज अ रोटरी डाई प्रोसेस टू फिल द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल. नेक्स्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल. तो सबसे पहला है वेट वेरिएशन टेस्ट. वेट वेरिएशन टेस्ट. यू हैव टू वेट 20 कैप्सूल्स. यू हैव टू वेट 20 कैप्सूल्स. हेलो, एक 5 मिनट का है. ठीक है, 5 मिनट का. So here is a quality control test for capsule. So weight variation test. So you have to weigh 20 inert capsule, 20 intact capsule. Calculate the average weight. 20 कैप्सूल लेना है, उसका एवरेज वेट कैलकुलेट करना है ना. एंड लिमिट इज नॉट लेस देन 90% एंड नॉट मोर देन 110% ऑफ द एवरेज वेट. तो 20 कैप्सूल इंडिविजुअली वे करना है, उसके बाद में एवरेज वेट वे करना है, और उसमें का कैप्सूल जो है इंडिविजुअल कैप्सूल का वेट 90% से कम नहीं होना चाहिए और 110% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 20 कैप्सूल you have to वे individually, and
The test pass weight variation test is passed when capsule weight individual capsule of weight of individual capsule is not less than 90% and not more than 110% of average weight of tablet, average weight of capsule. If weight variation for 20 capsule fails, then go for net content individually. नेट कंटेंट मतलब क्या, अगर ये फेल होता है ना, ये वेट वेरिएशन टेस्ट फेल होता है, उसके बाद में कैप्सूल ब्रेक करके उसमें का जो पाउडर है नेट कंटेंट वो इंडिविजुअली करना है. एवरेज वेट ऑफ 2 शुड नॉट गो आउटसाइड द लिमिट. आउटसाइड, इफ 20 कैप्सूल डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, then individual weight are determined, these are averaged and difference are determined between each individual net content and average. The test requirement are met if not more than 2 individual difference is greater than 10% of the average weight, or if in a no case the difference is greater than 25%. If more than 2 but less than 6 net weights are determined, test deviate more than 10% but less than 25%. इतना सारा छोड़ दो, बस इतना ही तो है. रिक्वायरमेंट मतलब 20 कैप्सूल फेल हो गए तो फिर से आपको नेट कंटेंट में जाना है, और नेट कंटेंट का फेल हो गया तो बाद में फिर से 20 कैप्सूल लेना है, वो भी फिर हो गया तो बाद में फिर से 20 कैप्सूल लेना है. तो 60 कैप्सूल में से 25% से ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस. एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल इज एंड रिस्पेक्ट टू द परसेंट डेविएशन एज पर द वेट वेरिएशन. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल इज लेस देन 300 मिलीग्राम, इफ एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल इज लेस देन 300 मिलीग्राम, तो 10% वेट वेरिएशन डेविएशन इज अलाउडेड. कैप्सूल का वेट अगर 300 मिलीग्राम है तो 10% डेविएशन इज अलाउडेड. इफ कैप्सूल वेट इज लेस देन 300 मिलीग्राम, 10% deviation is allowed. If capsule weight is if capsule weight is 300 milligram or more, अगर 300 मिलीग्राम से कम है तो 10% डेविएशन है अलाउ किया जाता है. अगर 300 मिलीग्राम है या फिर ज़्यादा है तो 7.5% डेविएशन. इससे वेट वेरिएशन कैप्सूल का है. टैबलेट में आपने देखा है 80 मिलीग्राम, 80 to 250, 250 to मोर देन 250 है ना. जैसे देखा है 80 मिलीग्राम है ना, we are saying 130 मिलीग्राम और लेस, 130 to 324 है ना, 322 उसके बाद में 324 से ज़्यादा, like that. So average weight of capsule is less than 300, then 10% deviation. If it is more than 300 or 300 mg, 7.5% deviation. कैप्सूल वेइंग मशीन्स है ना, रोटो वे वेरी गैप, they monitor the individual capsule and provide the ऑटोराइजेशन ओवरफिल्ड एंड अंडरफिल्ड कैप्सूल. मतलब ये जो कैप्सूल वेइंग मशीन है, रोटो कैप है ना, रोटो वे एंड वेरी कैप, ये ऑनलाइन ही मतलब जब कैप्सूल का फिलिंग चालू है तभी अगर अंडरफिल ओवरफिल हो गए तो ये कैप्सूल को फेंक देता है बाहर मशीन से. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, तो 30 कैप्सूल्स आर सिलेक्टेड, आउट ऑफ द 10 आर असेड बाय स्पेसिफिक प्रोसेस. इफ टेस्ट पासेस, इफ 9 out of 10 और विद इन द स्पेसिफाइड पोटेंशियल रेंज, मतलब 30 कैप्सूल सेलेक्ट करना है, उसमें का 10 का ऐसे करना है आपको बाय यूजिंग एचपीएलसी या जो भी मेथड है आपका, तो उसका रेंज होना चाहिए 85 to 115% है ना. 10th शुड नॉट बी आउटसाइड 75 to 125. डिसइंटीग्रेशन टाइम के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल नॉट मोर देन 30 मिनट. यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल नॉट मोर देन 60 मिनट. डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल नॉट मोर देन 30 मिनट. टीटी टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल नॉट मोर देन 30 मिनट एंड फॉर सॉफ्ट जिलेटिन नॉट मोर देन 60 मिनट. तो हार्ड जिलेटिन के लिए नॉट मोर देन 30 मिनट, सॉफ्ट जिलेटिन के लिए नॉट मोर देन 60 मिनट. dt टाइम के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 30 मिनट. व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल नॉट मोर देन 60 मिनट. रिजोल्यूशन
ऑफ सॉल्ट गेलेटिन कैप्सूल इज एज पर द USPNF, है ना, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी या नेशनल फार्मोलॉजी बाय रोटेटिंग बॉटल मेथड. This will end your capsule also. If anything is there, I will check in the book again and I will let you know. I will also take if anything is there. यहाँ पे you have to refer this book, Lackman, Leo Lackman. तो ये सब बुक इसमें से ही, कंटेंट सब इसमें से ही लिया वाला है. Theory and practice of industrial pharmacy, Leo Lackman. See you tomorrow. सुबह 9 बजे आप ज्वाइन हो जाओ केमिस्ट्री की वर्कशॉप के लिए, ठीक है. एवरीबडी शुड ज्वाइन एट 9 AM फॉर वर्कशॉप. थैंक यू.